आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ओआईएच लगातार अपने वेबिनार जो है वो कंटिन्यूटी में रखे हुए हैं, तो सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग नए हैं वो उन लोगों को मैं बता दूं कि ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड होम्योपैथी ऑर्बिट क्लिनिक्स का ही अपना एक इंटीग्रेशन है, जिसकी जो प्रिंसिपल हेड है वो डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा है। हम लगातार ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोगों के साथ भी वेबिनार करते हैं जो लोग थोड़ा पढ़ाई में रुचि रखते हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा ध्येय रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं और उनको भी ऐसा कुछ प्रेरित करूं ताकि आगे भी वो लोगों को पढ़ाएं। मैं और डॉक्टर शिल्पी इस पूरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। हम अपने कोर्सेज भी जारी रखते हैं और जो कंटिन्यूटी में वेबिनार्स है वो भी हम लोग जारी रखते हैं। इनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इन वेबिनार्स को आप लाइव सुनें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में शायद उतना मजा भी ना आए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा आज के वेबिनार में आपका। आज का जो वेबिनार था वो हमारे एक एसोसिएट कंसल्टेंट है डॉक्टर साक्षी गुप्ता, वो लेना चाह रही थी और उन्होंने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया था, उनकी प्रिपरेशन भी पूरी थी। लेकिन आज आउट ऑफ स्टेशन है और जहाँ पर वो है उनका नेटवर्क जो है वो मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने हमें मॉर्निंग में कैसे भी कॉन्टेक्ट किया, तो इसके लिए उन्होंने सबसे सॉरी भी बोला है। तो लेकिन हम इस वेबिनार को पूरा वैसे का वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने प्लान किया था। और फाइब्रो एडेनोमा के ऊपर क्योंकि हमारे पास भी बहुत कंटेंट था, हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में भी इसको बताया था। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप सब लोग जो लोग भी नए हैं हमारे इस नए कंटेंट के साथ फाइब्रो एडेनोमा को सुने। और जो आज की प्रेजेंटेशन है वो डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा खुद देंगी। मैं भी इसके बाद इनपुट्स दूंगा कुछ, जो भी मुझे लगेगा, अगर कुछ बचेगा तो वैसे डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा आपको सब कुछ बता ही देंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा आपका। और मैं चाहता हूँ कि बिना किसी देरी के आप जो अपने स्लाइड्स हैं वो शेयर करें और वेबिनार शुरू करें। थैंक यू मैम। Good evening, everyone. As Dr. Deepak said that Dr. Sakshi had to take the webinar today, but because of some unwanted, undue reasons, she could not join. So in place of her, I will be continuing and explaining the topic. The topic is fibroadenoma and the role of homeopathy in the treatment of fibroadenoma. So as I said, the topic is breast fibroadenoma and homeopathy. So I don't think I need to introduce myself. I think Dr. Deepak has already done that. So let's go ahead with the topic and discuss. It has been a very hot and very much in common topic these days because there are a lot many cases of fibroadenoma being seen these days. So that's why we picked up this topic so that we can have a chance to discuss. As we always say that OIH is not a platform in which we come and we teach. We consider all the students, and even myself and Dr. Deepak, we consider ourselves as students here. We are just trying to discuss whatever we have learned, whatever we know, and we'll be very, very happy if you all will be sharing your experiences and your knowledge from this. Now, the thing is, what is fibroadenoma? So in a very simple and very pure sentence, if I say, it is a type of benign or non-cancerous growth which has happened in the breast. So any type of a lump, any type of a growth which happens in the breast will be given the name fibroadenoma. Now, a little bit about breast, we know that it comprises of three parts: lobules, which are the main milk producing glands in the breast; ducts, which are the one which carry this milk to the place; and then apart from these two, there are glandular tissues, fatty and fibrous tissue. So fibroadenoma develops only from the milk producing glands, that is from the lobules. And since it is a growth inside, so the duct and gland, other fatty and fibrous tissues will be overgrowing it, will be growing over it, and they form a solid kind of a lump. Now, what is the etiology? What is the major reason? See, basically, we cannot say pinpoint any one particular reason that is the reason for the growth or development of the fibroadenoma. There are many, many reasons which can be thought of, but the main thing which has been, which the fibroadenoma has been associated with is high level of estrogen. So
The condition of the fibroadenoma usually comes whenever there is a high level of estrogen happening in the body. So the reasons for high estrogen can be many. Apart from that, one of the major very common reasons is taking OCPs, that is our oral contraceptive pills, which are used as a means of contraception, and especially if they are taken in an early age, like in the 18, 19, or before the age of 20s, then the risk of fibroadenoma development in the female is very, very high. Fibroadenomas usually are seen in the reproductive years because they are that is the age when there will be lobule which are more active. And they can become bigger during the pregnancy time. If before pregnancy any female is having some fibroadenomas, they can become bigger in size during the pregnancy. But usually without taking hormonal therapy or with taking the hormonal therapy, or during the menopause or as the age advances, since the hormonal level will decrease, so they normally shrink on their own without taking any medication also. Now, we can classify fibroadenomas in various categories. One of the type of classification is in which we classify them into two categories, mainly based on their size and mainly based on their movability. So one of them is pericanalicular fibroadenoma, which are usually hard and small, whereas intracanalicular fibroadenoma, they are soft, they're a little bigger in size. Pericanalicular, they are usually seen most of the time. They are clearly felt and they are mostly movable. When they are movable, they are given the name as breast mouse because they usually move whenever it is tried to be felt. They usually can be seen as a tremendous movement can be seen in them. And they're usually round or oval in shape. Whereas the other one, that is intracanalicular, they are usually not so movable. They're usually fixed. Now, both of them, it's not necessary that only one type of a fibroadenoma can be seen, only one type of at one time. Simultaneously together, both the patterns can coexist also. And they can be found separately as separate identities, or they can be found even as a mixed one. So this is on the basis of their movement, size, and their felt, how they are felt in the on the basis of where they are present. We classify them into these two categories. But apart from that, based on the age, based on their complexity, we generally classify them into four types as simple, complex, juvenile, giant. Simple is which are very, very simple, small in size, and they are like under the microscope when they are seen. They almost are very small in size, look very much similar, and they never come in the category of converting them into the cancerous stage. Then we have complex fibroadenomas, which are usually filled with some kind of a fluid, and they can, without a microscope also, they can be seen. They can sometimes convert into the risk of breast cancer, and they can be calcified because of the calcium deposition. If the fibroadenoma grows more than 2 inches, normally the other fibroadenomas, their size, if you see, it's almost like a size of a marble, which is 2.5 centimeters around. But the giant fibroadenomas, they can grow more than 2 inches also. And if the adenomas are found in young girls in the adolescent stage, then they usually disappear on their own. They are called as juvenile fibroadenoma. These are the ways we classify fibroadenomas and their etiology. So anyone would like to ask anything or discuss anything till now, whatever we have discussed, because our main aim is to discuss about homeopathy, the role of homeopathy over here. So I'm going fast, and I know most of you might be knowing all this. So when we come to homeopathy role, that is when I'll be going a little slower.
So anything anyone have to ask or discuss here? देखिए, जो लोग भी अपने कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है वो बीच में भी पूछ सकता है, अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है। इन केस अगर आपको लगता है तो आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं, हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। तो डॉक्टर शिल्पी, मुझे लगता है कि आप कंटिन्यू करें, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बीच में उसको देख लूंगा जरूर। ठीक है Okay, जी। sure. ठीक है. Fine. Now, what are the major clinical features? Normally, they are the major symptoms that we feel for them is mild tenderness, or they are just generally felt as some kind of a growth or a lump in the breast. Normally, they are painless. Normally, they don't present any type of problem, but few of the fibroadenomas in few young girls might show the tenderness and painful characteristics, especially a week, 10 days before their menstrual cycle is to be appeared. But that is also not a very regular symptom or clinical feature of the fibroadenomas. Now, they're usually painless, but they can grow in size. So they're slowly growing. Normally does not show any type of a symptom. But let me read out all these things so that we'll get to know that what are the major symptoms and signs that we will feel. A lump that is hard, not movable, or feels attached to the chest wall without pain, perhaps with dumpling or puckering of the breast. This might be a sign of breast cancer. So normally fibroadenomas do not have any of these symptoms. So these symptoms, if they appear, that is when we should have a thought of that whether we have to differentiate between fibroadenoma and a breast cancer. Pain or a feeling of fullness in one or both breasts that's not related to premenstrual swelling. Sometimes a painful lump with or without redness is the first sign of any infection. So sometimes fibroadenoma can become infected, and if there is a painful lump with or without redness, we can think of that maybe fibroadenoma has become infected. Masses may feel tender or painful, especially right before menstruation, when they may swell due to hormonal changes. Fibroadenomas are so mobile that women sometimes refer to them as breast mice, as they tend to run away from their fingers. So this is what we see as majorly as the sign and symptoms of the fibroadenomas. So if they become painful, if they are attached to them, that is when we should think about that it might be not fibroadenoma, but some other thing. Now, coming to the diagnosis part, we usually call it as triple assessment. The triple assessment comprises of the physical examination of the breast, mammography, ultrasonic X-ray, or FNA, that is fine needle aspiration. So these are the major ways by which the diagnosis is done. Now let's come to the homeopathic part of it. Now, as we all are aware that whenever we think about the curing of such type of disorders, we have to always reach to a miasmatic approach. So first we have to think about what is the miasm that is associated with the fibroadenoma. Now, various doctors, and like especially Dr. Kent and Dr. Hanneman, they all have tried to explain miasm in a very proper manner. And we all should also try to agree and think about like how to associate all these diseases with the miasm. Now, normally we all have learned about miasmatic approach of it. So since it is a growth, so the first miasm that comes in the mind is psychosis. Now, psychosis, as we all know, is the most dangerous and the very difficult to treat miasm. Now, the major traits that we think about miasmatic is mentally, if you think about, mentally we have to see
that normally people who are in psychotic miasm, they will be reacting after a long time. That is, there's a huge pause between the action and the reaction. When we talk about their mentals, we will see that they react in a way which is harmful to the person himself or herself. And sometimes they show such a change or drastic changes that they do not show any reaction at all, neither positive nor negative. And they always try to repress their emotions. So if we go to the mentals of the person who has the case of fibroadenoma, we should always consider finding their mentals. They always having a confused mental symptoms. Now, their mentals are always secretive, they are jealous, they're always in a hurting nature, irritability. All this comes under the psychotic miasm. Now, since here we are having both fibrous and glandular tissues involved, so we can even think about pseudosora and psychotic miasm. Now, why we should think about pseudosora? Because they are mostly occurrences in the upper outer quadrant of the breast, and they can grow as a spherical nodule to a size of 1 centimeter to 15 centimeters. So all this comprises of thinking about pseudosora. Fibroadenomas are normally hormonal responsive. They increase in size, maybe due to the late phases of the menstrual cycle, during the late phases. So that also is one of the symptoms of sora. So it's a complex miasm, pseudosora, but we should mainly think about psychotic, and mainly we should think about psychotic medicines in this. Now, when we are taking the case history of a person, when a lady or a person is having fibroadenoma, the main thing we should first think about is which mammary gland is affected, whether it is left or right, whether it's painful or not painful. If it is slight painful or tenderness is there, what is the way the pain is relieved? Like female sexual system, pain in breast, pain relieved by supporting heavy meme. This is the rubric that we will see in the Kent repertory. Apart from that, if there are any other parts, like if there are nipples associated or skin associated, or if we see some swelling as well, then these are the other rubrics that can be thought of. Now, I have gathered the information from almost like 4 repertories, thinking about what are the major rubrics that we should think about, like the repertory used by Dr. Phatak, from his concise repertory by Dr. Phatak SR. The main rubrics that are found in his repertory, which are mainly considered and thought of, or which we should refer to when we are considering the case, they are meme hard, indurated, menses absent with. Meme hard, indurated, small and colic during. Meme nodules in. Nodules in, black points on the skin with. So if there is some skin involvement, this is the rubric that can be thought of. Like as we learned, there is a kind of juvenile fibroadenomas. So for that, the rubric that we will find in Dr. Phatak's repertory is notes in girls, puberty before. Now, based on if they are present located in the axillary region, we can refer to the node rubric as notes in, knots in axilla with. If they are movable, especially if they are movable and the pain aggravates by moving the arm, the rubric should be notes in, movable, tender, especially when we are moving the arms. If there is some case that a female tells that the growth which she is having, the lump which she is having has been a very old one from a very, very long time. But since she did not had any problems or any symptoms, she had been ignoring it. So we refer to it as an old nodule. If it occurs in men, then it can be, this rubric can be referred if it is painful, notes in painful, old fat man in. If it is soft and tender, that's the next one. So these are how the
rubric can be seen. Same way when we see the repertory used by Robin Murphy. In this, mainly the rubrics which are used are mainly for tumors you will see here. So like the first one is especially for cancerous indurations. Second one, tumors, breast growth, fibroid. Based on the location, hard, left, painful. So this is how we will be going through all the repertories, and we can see that there are various different rubrics which have been used by different repertories. My main aim of showing this is that if we are referring one repertory, we might miss out some very common or some peculiar symptom which might be present in the other repertory. So like here, if you see in the previous one, Fatak, there was no relation of any rubric related to the, if there is growth of fibroadenomas, especially after the menopause. That will be found in Robin Murphy's repertory. That is the 9th one. So breast tumor, growth, menopause period in. That is, there are only few medicines which are included in this. And that is when, if we refer to 3-4 repertories, we will get to know that there are some very specific rubrics which we get, which might not be in one, but might be in the other one. Now, the most commonly used repertory, that is Dr. J.T. Kent's repertory. In this, we can again see based on the right and left, based on whether it's present during the menses, during the pregnancy. If there's specifically change in color and the mammary turns purple in color, so that there is some kind of less blood flow over in the mammary. So that rubric that can be used is chest nodule sensitive. Obviously, when there is less of blood supply and the purple color is seen, definitely the mammary will be sensitive. So in Kent repertory, these are the various rubrics that we can refer to. So like this was, if we see and use all the various Kent's repertories, all the 14 symptoms that we use, rubrics we use, we can see what are the major medicines that have been used. In that, the top category, the medicine coming is conium, next carboanimelis, silesia, graphitis, lac caninum, bryonia, iodium, sulfur. All these are the major medicines that have been used. So these are our more commonly used medicines in the repertory. From the repertory, we can find this. So if we just use as a general rubric in Kent repertory, the major medicines coming are carboanimelis, conium, kali iode, lachesis, phosphorus, sanguinaria, sickle core, and silesia. Now, there are various medicines that we will slowly discuss. I would ask Dr. Deepak to tell a little about the miasmatic approach. What do you think about it? जी डॉक्टर शिल्पी, बिल्कुल अभी डिस्कशन करेंगे मियाज़मेटिक बैकग्राउंड पे और बाकी मेडिसिन के ऊपर और कॉमन चीज़ों के बारे में जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। पर मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मेडिसिन वाला पार्ट है ये पूरा कर लीजिए, उसके बाद जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो कंबाइंड हो जाएगी। ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा। हाँ जी। So, yeah. So as we saw that in the Kent repertory, Dr. Kent has given the major emphasis on conium. So regarding the significance of the remedy, Kent writes, conium has been extensively used for malignant affections of gland because it takes hold of glands from the beginning, infiltrates, and they gradually grow to a stony hardness like scrous. Nodules in the breast, even where milk has not yet formed, lumps and nodules in duration. That means in the last sentence, you can say that even the milk has not yet formed lumps and nodules in duration. That means they're talking about even in the case of juvenile fibroadenoma, conium has a very great role. So conium is again one of the major medicines. Let's see carboanimelis. For that, what does Kent writes?
For carboanimalus, glands indurated, swollen, painful, in neck, axilla, groin, mammary, pains, lancinating, cutting, burning. So burning is a very common, very prominent symptom of the carboanimalus. Benign suppurations change into ichorous or malignant conditions. So if you see that their size is quite growing fast and they are converting, they are in a stage where we might think of that they might convert to malignant condition, then carboanimalus is something to be thought about. Now, there is one very rare but very significant homeopathic medicine that can be used for dissolving the tumors, lumps, nodes, or induration in the breast. That is Scrofulus nosoda. It is an extremely powerful medicine to dissolve and get rid of breast tumors. The chief clinical authority for this medicine is Cooper, who has used it on some old indications. Nodosities in the breast is indication of Cooper's. It has produced, according to a Cooper, a sickly, giddy feeling with a sense of weakness and sinking at the pit of chest. Too weak to speak, along with pain from forehead to back of head. It is mainly used in tincture form or in the first potency. So this is some medicine which is very rare and which is not very commonly found, but it has been significantly used and it has shown a very significant improvements in the cases of lumps and nodules. Pulsatilla also can be taken when the nodes are accompanied with some menstrual irregularities. The main irregularity related to pulsatilla is obviously, we know all that suppressed menses for a long duration or scented menses. Pulsatilla is also of a help if they develop some lump or nodes in the breast at the puberty time. Another very good medicine is Phytolecca decandra. It is a natural homeopathic medicine which can be beneficial for the treatment of fibroadenoma of breast when inflammation of breast associated with. Breast is extremely sensitive, hard, and painful. So these are the major symptoms that you can see in the Phytolecca decandron. Like if there is some kind of inflammation and painfulness also, that will disappear, followed by complete disappearance of the hardness. If this is a very prominent symptom seen, then Phytolecca is one of the major medicines to be thought of. Hard nodes in the breast with enlarged axillary glands. So Phytolecca is very helpful when there is a specificity of the area that is in the axillary region. Then Phytolecca decandron is to be thought of in the first place. Even if there is some kind of discharge seen from the mammary glands, we can think about Phytolecca decandron. Graphitis is again a wonderful medicine for treating tumors in the breast that are arising from some old scars in the breast. So if there was some old scar because of some injury or anything, then graphitis can be thought of. Old scar may have remained after healing of abscess in the breast. And at that place, if there is a new growth happening, the graphitis medicine will be working wonders. Tendency to grow cystic tumors, and it has tendency to produce excoriations, cracks at the junction, nipples, and also in the folds of skin. Now, not only in the dilution form, we even can use these medicines in the form of mother tinctures. So, conium, Phytolecca, thuja, carcinosin, pulsatilla, hydrestis, iodum, baryta carp, all these can be used even in the mother tincture form. And they play a very important role in the dissolving of the memory of the tumors or the fibroadenomas which are developing over there. Baryta carb, which we did not discuss earlier, its main fundamental pathogenesis of baryta carb is inflammation and induration. Dwindling of mammary glands, enlargement of the gland, lump, hard and stony in nature, which is very sensitive to touch, too tired even to eat. Pain in axillary gland, painful when walking, nipple discharge in blood and is bloody, and most common tumor is solitary or occasionally be multiple.
So when we are talking about a solitary or one single big lump, then we can think about Barytica. Iodum, nodosities in the skin of mammary with black points, mammary dwindling away, flabby and ulceration of mammary glands. Wedge-like pain with enlargement of mammary lymph node, suicidal tendency. So this is one very important symptom that we can think of. If along with some kind of depression and all, there is suicidal tendency, then iodine can be thought of. If there is no other defect in the body, there is no hormonal imbalance, there is no other PCOD or any other reason for infertility, and the only thing that is found is there is atrophy of the mammary with sterility, then iodium mother tincture can be used and it is very helpful. So these are few medicines that we can think of for treating the cases of fibroadenomas. Now, there was one small master's note I got that I thought of just sharing it with you all. Remembering from the lectures of Dunham, Pling and Avicenna recommends poultice of conium and corn plaster to remove tumors of the breast. In this case, the patient was suffering from the tumor of the left breast. Tumor was painful and aggravates on touch and also at night. This was the characteristic symptom throughout her complaint. The above-mentioned symptom reminded me of Herring's Materia Medica. It was found under the chapter Conium Mac as hard and painful lump in mammary. Tumor under left nipple as large as hen egg, moving freely under superficial fascia, very hard, painful on pressure. He clearly mentioned that Conium Mac is the most effective remedy, taking glandular induration into consideration. So, in majority of the cases of fibroadenoma, which I came across and which I read, and which I have seen that many people have shown very good impact of the medication, I have seen that some or the other place during the whole treatment course, Conium Mac was definitely used. So whenever fibroadenoma cases are there, try to think about Conium Mac. Now, this is a comparative thing about the medicines you can see, like Phytolica decandrin, Carboanimelis, Lachesis, Graphitis, Conium, Asteria, Chimphalia, and Osmium. If you see the location-wise, Carboanimelis and Osmium are right-sided. They will show mainly the indurations on the right side, right mammary. And if it is the infection is on the left side, then Lachesis, Asterias, and Chimphalia can be thought of. And what are the various sensations that can be seen? In Phytolica, the sensation is it's heavy, stony, hard, painful. Carboanimelis, it's mainly painful. In Lachesis, there will be swollen nipples, which are erect and painful. In Graphitis, swollen, hard, nipple sore, cracked and blistered. And in Conium, enlarged breast, stony, hard, painful to touch. Asterias, you will see swollen and painful sensation. Chimphalia, it will be very large breast with sharp pains. And Osmium, painful nipples to least contact and the breast feel full. Associated symptoms that is concomitant for Phytolica is they will always have prostration. In Carboanimelis, offensive secretion on face and scalp. Lachesis cannot bear anything tight around neck. Graphitis conium doesn't have any concomitant symptoms, but Asterias have neuralgia, hysteria, and chorea. Chimphalia mainly show scanty urine loaded with ropey mucopurulent sediment. And Osmium shows red sand in the urine. And modalities, Phytolica shows worsening, sensitive to electric change, rainfall while nursing, and better during the warm and dry weather. Carboanimelis worse due to loss of vital fluids. Lachesis worse by tight pressure or touch, better on discharge. Graphitis worse during or after menstruation, better wrapping up. Conium before and after menses worse, pressing the hand, better. And Asterias worse in cold damp. Chimphalia worse in damp weather.
So this is the comparative study of few of the medicines. I cannot do the comparative of all. So this I thought of showing the comparison. This is how we should do the comparison of all the medications, and this is how we should remember. So this was all from my side. Thank you. And Dr. Deepak, over to you now. यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पी। ज्यादातर आपने पार्ट बता दिया है। थोड़ी सी जानकारी जो मुझे लगता है कि सब लोगों को होनी चाहिए एक कॉमन प्रैक्टिशनर की तरह, वो बहुत जरूरी है। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब भी कभी पेशेंट आ जाए तो हम सबसे पहला जो टारगेट है वो पेशेंट को कैसे करेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन चीजें बताता हूँ जो अ, हम लोग प्रैक्टिस में जनरली मिस कर जाते हैं। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ये पॉइंटर चालू हो जाए। ओके, देखिए सबसे पहला काम है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहला जो उससे सवाल पूछना है वो ये पूछना है कि नंबर एक तो कब से हुआ है लम्प, और दूसरी बात उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो कितनी वैल्यूबल है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें ऐसी जरूर बता देता हूँ जिस जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे नंबर एक, तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो ये कहता है कि मेरी फैमिली में मेरी मदर को एक लंप था ब्रेस्ट में, लेकिन वो कोई कैंसरस नहीं था, और उनकी कोई सर्जरी भी नहीं हुई और उनका दवाइयों से ठीक हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि जब भी कभी आपको ऐसी हिस्ट्री मिलेगी जिसमें ब्रेस्ट लंप सिंगल मिलेगा, जिसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी या जिसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप हमेशा उसका 3 टाइम्स कैलकुलेशन करिए। मतलब जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है उसका जो इंसिडेंस है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। अगर मान लो आपको इस मदर में आपको मिलता है कि ब्रेस्ट का कैंसर था जिसकी वजह से उसकी सर्जरी हुई है या उसको कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो जो बेटी है उसको जो चांसेस होंगे वो 3 टाइम्स चांसेस होंगे ब्रेस्ट कैंसर के होने के लिए। तो इसलिए आप जब भी कभी ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी केस लें तो उसको हमेशा फैमिली हिस्ट्री से जरूर कनेक्ट करें। बिना फैमिली हिस्ट्री के, बिना फैमिली चार्ट के आप इसके किसी भी टाइप के केस को शुरू ना करें। दूसरी बात कि हम लोग जनरली होम पेस एग्जामिनेशन को मिस कर जाते हैं और हम ये नहीं देख पाते कि आखिर जो ब्रेस्ट लंप है उसकी अपीयरेंस कैसी है। इन केस अगर आपको लगता है कि हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं कर पाते, क्योंकि जनरली इंडिया के अंदर जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा कतराती हैं और कहती हैं कि नहीं ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन हम नहीं करने देंगे, तो आप उनको एक अल्ट्रासाउंड जरूर एडवाइस करो। और देखो, 2 टर्म अगर आपको मिलती है, मतलब अगर आपको ऑन एग्जामिनेशन हमेशा ऐसे लंप मिलते हैं जो मोबाइल हैं और होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो उसके मार्जिन्स हैं वो एक फाइन मार्जिन्स हैं और कोई भी इरेगुलरिटी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ अगर आपको यूएसजी में कोई टर्म मिल रही है हेट्रोजेनस, या आपको टच करने पर ऐसा फील हो रहा है कि जो मार्जिन है वो इरेगुलर है, तो आपको दोनों के लिए अपना जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बिल्कुल अलग अलग कर लेना है। अगर होमोजीनियस है तो आप इनिशियली ट्रीटमेंट को स्टार्ट करिए। अगर आपको हेट्रोजेनस अपीयरेंस या इरेगुलर अपीयरेंस मिल रही है तो वो कार्सिनोमा की तरफ ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसके चांसेस कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये पैथोलॉजी कहती है। और जो पैथोलॉजी कहती है वो भी झूठ नहीं होती है। मतलब हम ये नहीं कहते कि हम पैथोलॉजी को इग्नोर करके चलेंगे, तो पैथोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी कभी मेरे पास कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं तो मैं उनको 3 चीज हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करिए। इस समय पैथोलॉजी कहाँ पर है, मतलब वो जो लंप लेकर के आया, कोई भी पैथोलॉजी लेकर के आया पेशेंट, उस समय कहाँ पर है जब आपके पास आया, और वो कहाँ से आया है और वो कहाँ तक जा सकता है। तो अगर आपको ये बात पता है पैथोलॉजी का तो आप इससे बहुत अच्छे केसेस को ठीक कर सकते हो। आप किसी को भी एक अच्छी गाइडलाइन दे सकते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है, और हम ऐसे से एक ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ये एक डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि जब भी आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आप को ये बताएंगे कि हम इसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो आप केस टेकिंग में पूछेंगे। नंबर एक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी फीमेल्स यंग एज में आकर के जो उनके अंडरवियर है उनको गलत तरीके से पहनती है, जिसकी वजह से भी ब्रेस्ट लंप बहुत ज्यादा होते हैं। ये केसेस भी रिपोर्टेड है। ऑलरेडी इसके ऊपर एक डाटा भी बना हुआ है कि ऐसा होता है। तो हमें वो एजुकेशन देनी चाहिए। हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपको जो ड्रेसेस हैं वो अपने हिसाब से नहीं, आपके जो शरीर के हिसाब से वो पहननी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी बार हमारे पास मैरिड फीमेल्स में ब्रेस्ट की इंजरी के भी केसेस हैं। ये केस मैंने एक जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा पे एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मैंने शेयर करी थी, और उन्होंने भी जब स्टडी की
तो उनको भी पता लगा कि हाँ, आफ्टर मैरिज बहुत सारी ब्रेस्ट इंजरीज होती हैं जिसकी वजह से भी लम्प जो है डेवलप हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे मेन फैक्टर है वो है डाइटरी इंसफिशियंसी। बहुत सारे केसेस में विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी लंप हो जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी लंप हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं वो भी जरूरी हमें उनको बताना है। दूसरी बात, एक्सरसाइज पे आते हैं कि जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत जरूरी है। एक फीमेल को जैसी मीनाती में शुरू होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जैसी शुरू होता है, तभी से मदर को एक्सरसाइज सिखाना चाहिए अपनी बच्चियों को। लेकिन जनरली हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ये कॉमन है, ऐसा होता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए अगर कोई ऐसी फीमेल आ रही है जो अपने ब्रेस्ट पेन लेकर के आ रही है, कोई लंप नहीं है, लेकिन मेंसेस के दौरान या मेंसेस से पहले या मेंसेस के बाद उसको ब्रेस्ट पे पेन आ रहे हैं, तब भी लंप आने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें प्रोलेक्टिन को भी एग्जामिन करना है, हमें उसके जो बाकी सिम्टम्स हैं उसको भी एग्जामिन करना है। जहां तक बात आई, एक जो सबसे कॉमन फियर है जो फीमेल में भी होता है और डॉक्टर्स में भी होता है, मतलब खासकर जो हमारी आयुष के डॉक्टर्स हैं उनमें एक फियर है, और जो मैं चाह रहा था इस फियर को बताने के लिए, वो मोहम्मद मुजम्मिल ने क्वेश्चन भी पूछा है कि बायोप्सी क्यों ना कराई जाए। तो मैक्सिमम फीमेल से कहती है कि नहीं, हम बायोप्सी नहीं कराएंगे। डॉक्टर्स भी, जितने भी आयुष के डॉक्टर्स हैं वो भी, हम सब लोग भी रिकमेंड करते हैं कि बायोप्सी ना कराई जाए। अब बायोप्सी की एक्चुअल जरूरत क्या पड़ी और क्या मतलब है कि बायोप्सी आप कब कराएंगे और कब नहीं कराएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री लें। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई भी कार्सिनोमा के स्ट्रॉन्ग फीचर्स मिल रहे हैं तो आप बायोप्सी की तरफ जरूर मूव करें, ताकि हमें पहले से पहले पता लग जाए कि किस टाइप का कैंसर है और वो आगे कितनी स्पीड से स्प्रेड करेगा। अगर आपको लगता है कि वो जो लंप है वो बहुत मोबाइल है, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा स्किन के अंदर लंप लेकर के आया और आपने दोनों फिंगर से ऐसे मूव करके देखा और वो मोबाइल हो रहा है, तब आपको एफएनएसी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी खामी जो है एफएनएसी की, मतलब डर क्यों लगता है या क्यों डरना चाहिए एफएनएसी से, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी कोई पैथोलॉजिस्ट निडल से बायोप्सी करता है तो वो करता क्या है कि जैसे मान लो अगर कोई लंप है, मतलब अगर लंप है तो उस लंप के अंदर जो है वो बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन इंजरीज कर देता है। मतलब वो एक फ्लूइड निकालने के लिए उस लंप के चारों तरफ से जो फ्लूइड निकालने के लिए कोशिश करते हैं, वो एक मल्टीपल इंजरी होती है एक फीमेल के लिए और उस लंप के लिए भी जिससे वो फ्लूइड निकाला जा रहा है। तो वो एक सबसे खतरनाक तरीका है। तो हमें ऐसे बायोप्सीज के सेंटर्स को चुनना चाहिए जहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हों, जो एक बार के अंदर उस फ्लूइड को निकाल पाए। जब हम कभी पढ़ते थे तो हमारे जो सर्जन है वो हमेशा एक बात समझाते थे कि जो कैंसर है वो एक चींटियों का जो गुच्छा है, या तो उसको एक साथ पकड़ो और उसको बाहर निकाल दो। अगर आपने उसको टच करा तो सारी चींटियां इधर उधर फैल जाएंगी। ये मिथ बहुत सारे लोगों में है, और कुछ जगह पर कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जहाँ पे ये मिथ नहीं होता, वहां पे वे फैक्ट भी होता है। मतलब कुछ ऐसे कैंसर्स के टाइप होते हैं जहाँ पर अगर एक बार नील प्रिक हुई तो उसकी वजह से वो कैंसर जो है वो शायद फैल जाता है। ये भी डाटा अवेलेबल है। और बस एक सबसे बड़ा जो मेरा मतलब मोटो रहता है, जब भी कभी ब्रेस्ट डिजीज को लेकर के कोई भी फीमेल आती है तो हम सबसे पहले उसका एक प्लान करते हैं। हम कभी भी जल्दबाजी नहीं बचाते उसको मेडिसिन देने में। हम कभी भी जल्दबाजी नहीं बचाते कि हम उसका एक दिन में लंप ठीक कर देंगे। हम पूरा एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, उसके तहत ही हम लोग काम करते हैं, ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट दे पाए हम अपने सिस्टम को भी और उस पेशेंट को भी जो हमारे पास इतने फेथ से आया है। अब जो सबसे मेन बात रही वो रही म्याज की। जनरली जो ब्रेस्ट लम्प के जो डिजीज है, ज्यादातर ब्रेस्ट लम्प के डिजीज हमेशा ट्यूबरकुलिनम या ट्यूबरकुलर चार्ट को म्याज को लेकर के आते हैं इन इनिशियल स्टेज। उसके बाद वो डिपेंड करता है कि वो जो लंप है वो कितनी स्पीड से दूसरी जगह पर कन्वर्ट करेगा, मतलब दूसरे म्याज में कन्वर्ट करेगा। साइकोटिक एक बहुत कॉमन सा म्याज माना जाता है सभी के लिए कि ओवर ग्रोथ है तो साइकोटिक है। लेकिन जब आप कभी ब्रेस्ट ट्यूमर के पैथोलॉजी को समझोगे, जैसे अभी डॉक्टर शिल्पी ने आपको पढ़ाया कि जो फाइब्रस है वहां पर कोई लंप बन रहा है, कोई इंजरीज की वजह से लंप बन रहा है, कोई एकदम से लंप बन करके तैयार हो गया है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो मियास्म आता है, जो सबसे बेस्ट मियास्म आता है वो ट्यूबरकुलर मियास्म आता है, जो कि सोरिक और सिफिलिटिक के बीच का अपना एक स्टेज है। यहीं से डिपेंड करता है कि वो जो पेशेंट है, जो लंप है वो किस तरफ मूव करेगा। साइकोटिक को मैं इग्नोर नहीं करता, लेकिन फिर भी जो डोमिनेंसी है वो ट्यूबरकुलर मियास्म की है। तो इसलिए हमेशा उन मेडिसिन का भी ध्यान रखना है जो इन मियास्म को कवर कर रही हैं। दूसरी बात ये कि अब मेडिसिन का जो सिलेक्शन है वो कहाँ से करेंगे। आपके पास एक आपने प्लान कर लिया, आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, आपने सब कुछ करा के देख लिया। तो मेरा जो अपना प्रोटोकॉल रहता है वो सबसे पहले रहता है कि हम सबसे पहले लोअर पोटेंसी से शुरू करें।
मतलब या तो वो 3x हो, या वो 6x हो, 6x हो, या फिर वो 6C हो, या 12C हो। तो जो इनिशियल प्लान है वो सबसे पहले इसी का करना है। दो मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज करते हैं लोग, नंबर एक तो कार्सिनोसिन, दूसरी सिक्रीनम है, और एक फाइटोलक्का। ये ऐसी मेडिसिन हैं जिनके बारे में हमें कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग तो कैंसर का नाम सुनते ही कार्सिनोसिन को देना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कार्सिनोसिन का कोई पेशेंट है तो उसकी फैमिली में जो हिस्ट्री है वो कैंसर्स की मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि आज ही कैंसर हुआ और उसी पेशेंट को आप कार्सिनोसिन देना शुरू कर दो। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि फैमिली में कहीं भी कोई हिस्ट्री नहीं है कार्सिनोमा की, तो उसके लिए आपको हमेशा सिक्रीनम यूज करनी चाहिए। तो दोनों ही एक सी मेडिसिन है, लेकिन इन दोनों का जो चयन करना है वो बहुत बहुत जरूरी है कि इसको आप बहुत सिलेक्टेड उसमें दें। और कभी भी यहाँ से इनिशिएट ना करें। मतलब पेशेंट को जब भी आपके पास आए, अगर वो कोनियम का पेन लेकर के आ रहा है तो कोनियम से स्टार्ट करो, अगर वो फाइटोलक्का के सिम्टम लेकर के आ रहा है तो फाइटोलक्का के सिम्टम से शुरू करो, अगर आपको लगता है कि थूजा के सिम्टम लेकर के आता है तो थूजा से शुरू करो। इंटरकरेंट रेमेडी एज ए कार्सिनोसिन, सिक्रिनम या स्ट्रोफलस सोडा जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई है, इनको हमेशा एज ए इंटरकरेंट यूज करो। वो भी जब यूज करो जब आपको लगे कि हाँ हमारा कोई जो केस प्रोग्रेस है वो रुक गया है, या हमें कोई दिक्कत आ रही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मेडिसिन का जो सिलेक्शन है वो बहुत बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आपने ब्रेस्ट डिजीज में कुछ भी आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो ब्रेस्ट के केसेस जो है वो बहुत जल्दी बिगड़ते भी है, और उससे हमारा जो सिस्टम है वो भी डिफेम होता है, और जो हमारा पेशेंट है वो भी परेशान होता है। तो इसीलिए मेरी सब लोगों से एडवाइस है कि नंबर एक तो प्रोटोकॉल के तहत काम करें। हमारे अंदर मतलब जो मैं होम्योपैथिक सिस्टम की बात करता हूँ, जितने मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, जितने भी सेमिनार्स को मैं देने जाता हूँ, तो सब लोगों में एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जैसे ही पेशेंट आया हमारे दिमाग में मेडिसिन घूमने लगती है। ऐसा होता है कॉमनली कि जैसे ही हमारे पास पेशेंट आया हमने सोचा कि यार नेट्रम्यूर होगी, सीपिया होगी, कोनियम है, जैसे उसने लंप के बारे में बोल रहा तो हमारा दिमाग साइकोटिक की तरफ चला गया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो प्री ज्यूडिस डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर हनीमन सर ने, वो उसका मतलब ये था कि आप जरा पहले थोड़ा अपने आप को इत्मीनान कर लें। पहले आप डिस्कशन कर लें अपने मन के अंदर कि आखिर मुझे करना क्या है। तो फर्स्ट डे पे मेडिसिन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कभी ब्रेस्ट लंप का कोई पेशेंट आएगा आपके पास, वो ऐसा तो नहीं होगा कि कल ही उसका ब्रेस्ट लंप अपीयर हुआ है वो आज आपके पास पेशेंट आ गया। ऐसा बहुत रेयर चांसेस है। जो लोग फीमेल्स अपना ध्यान रखती हैं वही लोग ऐसा बता सकती हैं कि एक दो दिन के अंदर आपके पास आ जाए, वरना ज्यादातर 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, या 1 हफ्ते पुराना ऐसा लेकर के आएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आज ही आप उसको ठीक करोगे। आप कल परसों 1 हफ्ते बाद भी अगर इनिशिएट करते हो अच्छी मेडिसिन के साथ, तो ये एक सबसे अच्छी अप्रोच होती है। आप उसको एसएल लेकर के भेजिए, आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए को लेकर के भेजिए। अभी हम पिछले 3 या 4 सालों में, कोविड से पहले से हम लोगों ने जो स्टार्ट किया वो पीसीओएस केसेस में और ब्रेस्ट से रिलेटेड ऐसे जितने भी डिजीज हैं, हमने बिना इन्वेस्टिगेशन किसी को भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारे पास भी एक डाटा कलेक्शन हो जाए और हमें पता लगे कि हमें किस राह पे चलना है। तो ब्रेस्ट डिजीज में कभी भी आप गलत डायरेक्शन मत अप्रोच करिए। आपको एक पेशेंट को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के दो मेन पार्ट हैं। नंबर एक तो उसको सिखाना कि लंप है क्या, वो कैसे ठीक होगा, वो कैसे आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा उसकी डाइट के बारे में, दूसरा तीसरा उसकी एक्सरसाइज के बारे में। मेडिसिन तो एक पार्ट होता ही है डॉक्टर का, लेकिन इसके अलावा भी बाकी दोनों पार्ट भी एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो जरूर करें। जहां तक मेरे से मेडिसिन के बारे में अगर पूछोगे कि मेरी फेवरेट मेडिसिन कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं थूजा को लेता हूँ। उसमें सबसे पहले उसके बाद मैं ट्यूबरकुलोन भी यूज करता हूँ एज ए इंटरकरेंट। मैं यूज करता हूँ फाइटोलक्का, और मैं फाइटोलक्का बेरी और डिकेंड्रा दोनों को यूज करता हूँ। ज्यादातर फीमेल्स में जब इंजरीज के केस आते हैं और हमारे पास, मतलब जब मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट सर के सामने ये कंसेप्ट रखा था तो उन्होंने कहा कि यार हमने कभी भी ऐसा कभी प्लान सोचा ही नहीं कि ऐसा इंजरी भी होती होंगी। तो हमने ब्रेस्ट लंप के बहुत सारे केसेस को हमने आर्नी का 3x पे भी ठीक किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने आर्नी का 1M लेकर के भी ठीक किया हुआ है। आर्नी का 3x जो है वो सबसे प्राइम रेमेडी है। अगर आपको किसी भी टाइप की ऐसी इंजरी हुई है कि उन्होंने कुछ अंडर गारमेंट्स गलत पहन लिए, उसकी वजह से उनको प्रेशर लगा। बहुत सारी हमारे पास फीमेल ऐसी भी हैं जिनको पार्टीज के लिए, अपने ऑफिस के लिए, ऐसी जगह पर उनको डेली अंडरवियर ऐसे पहनने पड़े जो उनकी मजबूरी थी। तो हमने आर्नी का 3x को चूज किया, उसने बहुत वंडरफुली काम किया है। 1M को हमने बहुत कम केसेस में यूज किया है, और वही यूज किया है जहां हमें पिक्चुलर कोई ऐसा सिम्टम मिल गया। इसके अलावा जो सबसे फेवरेट रेमेडी है वो मेरी सिम्फाइटम भी है। रूटा इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। कोनियम तो अपने आप में बेस्ट एक्शन है, लेकिन जो कोनियम के मेरे पास रिजल्ट है वो थोड़े कम है। मतलब या तो हो सकता है कि जो मेरी कोनियम होगी वो खराब होगी, तो मैं इसकी कंपनी चेंज करने की सोच रहा हूँ।
लेकिन कोनियम के इम्पैक्ट जो जितना बुक्स में लिखे थे वो या तो मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं पोटेंसी का सिलेक्शन गलत कर रहा हूँ, या मेरी जो कोनियम है उसकी कोई बॉटल खराब होगी। तो कोनियम पे हम और काम कर रहे हैं कि हम उसको मदर टिंचर से शुरू करके लोअर पोटेंसीज में भी शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर क्लार्क कोनियम के बारे में हमेशा 3x के बारे में बोलते थे, वो 3C के बारे में बोलते थे और 6C के बारे में बोलते थे। तो डॉक्टर क्लार्क जो है हमेशा ऐसी लोअर पोटेंसीज पे काम करा है उन्होंने, तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं। तो मेरी तरफ से डॉक्टर शिल्पी ये इनपुट थे। कुछ किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज वो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है, हम इसको 2-4 घंटे भी बोलेंगे तो भी कम। What about the role of LM potency, Mohammed अच्छा, Muzammil हाँ, has asked? गुड। देखिए, एलएम पोटेंसी के बारे में एक जो सबसे प्रचलित बात है कि सब लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर हेनुमैन सर ने सबसे लास्ट में जो पोटेंसी इजाद की वो एलएम पोटेंसी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि होम्योपैथी में जब भी डॉक्टर हैनीमैन सर ने मदर टिंचर से काम शुरू किया और वो एलएम पर जाकर के रुके, तो उनके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस रहे। उन्होंने कभी भी किसी पोटेंसीज को बेकार नहीं कहा है। बस ये कहा है कि जो एलएम पोटेंसी उनका सबसे मेन एसेंस था, मतलब जब वो गए तो उससे पहले जो उनकी लेटेस्ट इन्वेंशन थी वो एलएम पोटेंसी थी। तो एलएम पोटेंसी बेकार नहीं है, एलएम पोटेंसी तो हर जगह बढ़िया है। मतलब जैसे मुझसे पूछते थे लोग कि कोविड के अंदर की दूध और हल्दी ले लें, तो मैंने कहा कि भाई कोविड में ही नहीं, वो तो पहले भी बहुत अच्छा काम करता था, आज भी काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। तो दूध हल्दी हमेशा ऐसी अच्छी है, तो वो कभी बुरी नहीं है। ऐसी हमारे यहाँ की एलएम पोटेंसी भी बढ़िया है, हमारे यहाँ के 3C की पोटेंसी बढ़िया है, हमारे यहाँ पे 6C भी बढ़िया है। हमारे यहाँ पे हर एक पोटेंसी का अपना एक महत्व है। मैं किसी को भी ये सलाह नहीं देता कि आप किसी एक पोटेंसी पे स्टिक रहो। मैं सबको बोलता हूँ कि आप मदर टिंचर से लेकर के एलएम पोटेंसी तक, CM तक, जो भी आप पोटेंसी यूज कर सकते हो करो। बस उसको सीखो, उसके ऑब्जर्वेशन देखो। आपको लगता है कि एलम्पोडेंसी बढ़िया काम कर रही है, आप एलम्पोडेंसी पे जाओ। आपको लगता है कि 30C बढ़िया काम कर रही है, आप 30C पे जाओ। आपको लगता है 200 बढ़िया काम कर रही है, CM बढ़िया काम कर रही है, आप CM पे जाओ। तो जो पोटेंसी का स्केल है वो कभी भी कोई भी पोटेंसी बेकार नहीं होती, मोहम्मद मुजम्मिल। हमेशा हर पोटेंसी अच्छी है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस पोटेंसी से पेशेंट ठीक हो जाए, बस वो पोटेंसी बढ़िया है। तो मेरी तरफ से ये जवाब है। और किसी का कोई सवाल? अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं अगर कोई टाइप नहीं करना चाह रहा है तो। देखिए, ओआईएच में हम लोगों ने जो प्लान किया था, मैंने और डॉक्टर शिल्पी ने, वो ये किया है कि हम आपको वो चीजें बताएं जो आपको जनरली बुक्स में या सेमिनार्स में या प्रैक्टिकल चीजों के लिए नहीं मिलती है। तो हमारा हमेशा यही रहा है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर करें, जो हमने एक्सपीरियंस किया है हम उसको शेयर करें। ऐसा नहीं कि हमने कोई फेक केस बनाया और हमने आपको प्रेजेंट कर दिया कि हमने ये सिंगल पोटेंसी से ठीक कर दिया। ऐसा नहीं है, आप जो भी पूछेंगे, आप हम जो भी बता रहे हैं वो चीजें बता रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकली की हैं। नीरज जी, फाइब्रो एडिनोसिस और फाइब्रो एडिनोमा, देखिए दोनों ऐसी चीजें हैं जहां पर पैथोलॉजिकली चेंजेस आते हैं। फाइब्रो एडिनोमा का मतलब है कि इनिशियल स्टेज पर एक फाइब्रॉइड का डेवलप होना, और फाइब्रो एडिनोसिस का मतलब है कि कुछ ऐसे फाइब्रॉइड जहाँ पे एडिशन शुरू हो गए। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में आपको ये जानना जरूरी है कि जो फाइब्रॉइड है उसका जो इरेगुलर मार्जिन है और जो रेगुलर मार्जिन है, इनका पता लगाना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, जिस समय अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं होते थे उस समय पे जो सर्जन है वो सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही ये बताते थे कि यार ये जो फाइब्रॉइड है ये बहुत डेंजरस है या ये नॉर्मली ठीक हो जाएगा। तो दोनों में अगर फाइब्रोएडेनोसिस शुरू हो गई है तो इसका मतलब आप जो पेशेंट है वो थोड़ा खतरे में जा रहा है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दोनों में सिर्फ पैथोलॉजिकली डिफरेंस है। हाँ, दोनों में डेंजरस फाइब्रोएडेनोसिस ही है। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है डॉक्टर शिल्पी, मुझे लगता है कि यहाँ पे सब लोग सब समझ गए हैं, और यह बिल्कुल नहीं समझे तो खैर जो भी है इसकी रिकॉर्डिंग शायद अवेलेबल ना हो, अगर होगी भी तो ओआईएच के जो हमारी हेड है डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा ये डिसाइड करेंगी, और अगर होगी तो हम आपको बता देंगे। सो आप लोगों को कैसा हमारा वेबिनार लगा, इसके लिए आप जरूर हमें बताएं, या हम और कहाँ पर मेहनत कर सकते हैं उसके बारे में हमें जरूर बताएं, ताकि हम लोग जो है इस पर और अच्छा सा काम कर सकें।
और हमें 9711773617 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या 9711153617 पर हमें बता सकते हैं। जो हमारा ईमेल, जिससे आपको ईमेल आया होगा, आप उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर शिल्पी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर दीपक, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। रिकॉर्डिंग ऑफ करो मैम। हाँ जी। जी। थैंक यू।